And in our continuing series on amazing Indians, Sarla Lakhawat has changed the face of Anta village in Rajasthan by introducing the farmers to the technique of processing amla or the Indian gooseberry. She has not only provided them with a livelihood but has helped women in the village become financially independent. This is her incredible story. These farmers in the Bara district of Rajasthan were contemplating giving up the cultivation of amla or the Indian gooseberry. आंवले के दाम अच्छे नहीं मिलने के कारण हमारी जमीन का जो पहले हमें मुनाफा मिलता था खाली में, तो वो बगीचे से नहीं मिल रहा था. With very few buyers, they were forced to sell their precious fruit at a meager cost, incurring huge losses. But in 2007, this local food and nutrition scientist came up with a plan, one that changed the face of this village in Rajasthan. Dr. Sarla Lakhawat taught the men and women of the village the technique of processing. Not only did it boost amla production, it ensured critical nutrition for children and gave women an income. ये पूरा मिशन हमने बगीचे को बचाने से बच्चे की हेल्थ तक का मिशन हमारा था और उसमें तक बगीचे बच जाएं, महिलाओं को रोजगार मिल जाए और बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम दे सकें. जहाँ हम पहले 1 बीघा से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कमाते थे आंवले से, तो 50-60 हज़ार रुपया बीघा, 70-80 हज़ार रुपये बीघा तक कमा लेते हैं. मतलब Sarla recommended processing the fruit into candy, murabba and laddus. And to deliver on this idea, she formed women into self-help groups for processing and distribution. ये आंवला प्रोसेस करने के बाद मेरा परिवार में खुद चला रही हूँ, उनसे इनकम हुई. मेरे बच्चों को मैंने अच्छे स्कूल में भेजा. पहले मैं किराए के मकान में रहती थी और फिर इन्हीं इनकम से मैंने खुद मेरा घर का मकान बनाया. Besides providing a fillip to amla production, she worked on a technique to benefit the garlic farmers in Anta. She set up a post-harvest unit to process garlic using solar energy. The dried garlic in its powdered or granule form is then exported across the globe, making them earn huge profits. उस लहसुन का उपयोग हमने पहले किया जो डैमेज होने लगा था और उससे आप सोचिए जो 3 से 4 रुपए 5 रुपए की हम बात कर रहे हैं, उससे ये हम मिनिमम हमारा 300 रुपए में गया है जो लोअर है और हाईएस्ट हमारा 1200 रुपए में गया. Sarla Lakhawat has created a flourishing livelihood in this village of Anta in Rajasthan. And for her relentless efforts, we salute this grassroots soldier.